Assalamu alaikum. So this is Algebraic Topology lecture series. So today our topic is homotopy of paths. Okay. The chapter name is the fundamental group. So today our topic is homotopy of paths. So let's see this definition. First of all, read this paragraph. So now we consider the special case in which f is a path in X. Recall that f is a path from 0 to 1 close interval, 0 to 1 close interval to X topological space is a continuous map such that f of 0 is equal to x naught and f of 1 is equal to x1. Okay. So according to this definition, this is a path definition. So let's write in this path definition. So f is a continuous map from I, or f is a continuous path from I to x such that, okay, such that I क्या है हमारे पास, I is a zero close interval from 0 to 1 such that if we substitute 0 we get x naught, which is initial point. Okay, this is initial point. And if we substitute in the place of I is equal to 1, we get x1. This is the terminal point. Okay, this is the terminal or final point of path in X, which means that f is a path from 0 to 1. Okay, ये क्या है हमारे पास, एक path है close, sorry, ये this is a continuous path from 0 to 1 to topological space X. If we substitute f of 0 in this function, so we get the first point, and at last point f of 1 we get x1. Okay, this is the terminal point and this is the initial point according to the definition of continuous path. Okay, so let's read again. So ये कह रहे हैं कि this is a continuous map such that f of 0 is equal to 0 and f of 1 is equal to 1 according to. We say that f is a path from x naught to x1. We also says that x naught is initial point according to जो हम लिखा है x1 is the final point of the path f. In this chapter initial point x naught initial point है, x1 is final point है. ठीक है, we shall for the convenience use interval I 0 to 1 as the domain of all paths. Okay, सो अब यहाँ पर ये इस डेफिनेशन में हम क्या देखेंगे, इस डेफिनेशन में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास दो पाथ्स हैं f एंड f प्राइम आर टू पाथ्स इन x, देयर इज अ स्ट्रॉन्गर रिलेशन बिटवीन देम मेयर होमोटॉपी. ओके, होमोटॉपी इसकी डेफिनेशन देखेंगे. अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस पाथ होमोटॉपी? सो लेट्स रीड द डेफिनेशन. टू पाथ्स f एंड f प्राइम, अच्छा टू क्या कह रहे हैं, टू पाथ्स f एंड f प्राइम आर होमोट मैपिंग फ्रॉम इंटरवल I 0,1 टू x. ओके, ये पाथ कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास? अच्छा, इसको हम जो है लिख लेते हैं. दिस पाथ्स f, f प्राइम फ्रॉम I टू x. ओके, I क्या है हमारे पास, 0,1 क्लोज इंटरवल है. अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि सेम इनिशियल पॉइंट, they have same initial point x naught and same final point x1, और ये पाथ होमोटॉपिक होंगे. Two paths f and f prime. Okay, they are saying that two paths f and f prime are the maps from I to x are path homotopy if, अब यहाँ पर क्या, if there is a continuous map I cross I to x such that f of s comma 0 is equal to f of s comma 1 is equal to f of s prime, f prime of s of f of 0 comma t is equal to x naught and 1 comma t is equal to x1. चलें इसको हम लिखते हैं ताकि इसको इजीली हम समझ सके.
Okay, so let's write. They are saying के two paths f and f prime from I to x. अच्छा, they have same initial and final point, which means that if we substitute f of 0 and f of 0, f prime of 0, okay, we get x naught. And if we substitute 1 in first path and second path, we get x1. So they have same initial and final point. And we are saying that they are path homotopic. F and f prime are path homotopic. Okay, ये कब होंगे path homotopic? According to the definition, if there exists a continuous map. किस टाइप का continuous map? H is a continuous map from I cross I to I cross I to X such that, अच्छा यहाँ देखें, अब I cross I, X cross I नहीं, which means that के 0, 1 cross 0, 1, 1 to X such that if f of s, 0, अगर हम देखें यहाँ पर t is equal to 0 पुट करते हैं, so we get first path f of s, and for all s belongs to I, and f of s, 1, if t is equal to 1, so we get सेकेंड पाथ एफ ऑफ एस प्राइम ऑफ एस। और अब हम अगर एस को देखें, एस को अब हम फिक्स करें और टी को चेंज करें, इफ वी सब्स्टिट्यूट 0, इफ वी सब्स्टिट्यूट एस की जगह पे 0, टी, एंड फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू I to 0, 1 interval, so we get x naught, and if we substitute in the place of s is equal to 1 and t हम जो है वेरिएट करें 0 to 1, so we get final point। अच्छा, इसको देखें ये किस तरह से है। ये इस तरह से है कि आप देखें, ये आपको भी डायग्राम से समझ में आ जाएगा। मतलब I क्रॉस I जीरो इंटर, ये 0 से 1 है, ये 0 से 1 है, दिस इज एस है, दिस इज टी है, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर आप एफ ऑफ एस कॉमा 0 रखें, मतलब टी इज इक्वल टू 0 रखें, टी इज इक्वल टू 0, इस पूरी लाइन पर टी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये जो ब्लू से कर रहा हूँ, इस पूरी लाइन पे टी इज इक्वल टू 0 है, सो वी गेट एफ ऑफ एस। अच्छा, अच्छा ये देखें, ये एफ ऑफ एस आ गया, ठीक है। मतलब ये जो एस है, ये एस क्या करेगा, ये एस पाथ बनाएगा, दिस इज अ पाथ फ्रॉम एक्स नॉट टू x1। अच्छा, जब आप फिर एफ ऑफ एस कॉमा 1 रखते हैं, टी 1 रखते हैं, सो वी गेट फाइनल पाथ एफ ऑफ एस प्राइम, एफ प्राइम ऑफ एस। सो अच्छा, ये एस, अच्छा फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू, ये जो ये वाला है, ये क्या करेगा, ये पाथ को ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एस को 0 रखते हैं, इफ वी सब्स्टिट्यूट एस जीरो इस पूरी लाइन पर होगा, इस पूरी लाइन पर S0 है, सो और टी को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, सो वी गेट एक्स नॉट, ठीक है, एक्स नॉट मिलेगा। और अगर हम इस पर जाते हैं, अगर हम एस को वेरिएट, एक्स को हम फिक्स करते हैं, मगर अब हम एस क्या रख रहे हैं, इफ वी सब्स्टिट्यूट इन द प्लेस ऑफ एस इज इक्वल टू 1, और टी को ट्रांसलेट करते हैं, टी चलेगा मगर एस 0 होगा, इस पूरी, सॉरी, एस इज इक्वल टू 1 होगा, तो वी गेट फाइनल point x1। So we can say कि f and f prime are path homotopic if there is a path homotopy। किस टाइप की, I क्रॉस I से x की, अगर हम f of s, 0 रखें फर्स्ट पाथ, f of s, 1 रखें सेकंड पाथ, मतलब t, देखें t 0 से 1 तक जाता है, तो हमारे पास ये पाथ चेंज होते जाते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस पाथ चेंज होते जाते हैं। और अगर हम टी एस को चेंज करें कि एस 0 रखते हैं, सॉरी एस को फिक्स रखें कि एस 0 रखते हैं, तो एक्स नॉट और x1 रखते हैं, तो दिस पाथ, मतलब उनके हर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट सिमिलर होंगे, ठीक है। एस इज इक्वल टू 0 पर, एस इज इक्वल टू 0 पर दोनों के एक्स नॉट मिलेगा, और एस इज इक्वल टू 1 पर हमें क्या मिलेगा, x1 मिलेगा। दिस इज द definition of path homotopy। Okay, so let's end this video. Allah Hafiz।